Now, this is the pledges of Aqaba. Hmm. Is it coming on your screen? Yes, sir. Achha, what we have learned up till now, that Prophet he went to Miraj, he started performing 5 time prayers, and he started focusing to the strangers because he had no hope for the people of Makkah. He failed in a way, you can say, at the place of Taif, and he changed his strategy. You know, his strategy change kar di कि by now I should preach to the strangers, and that made him to go and meet those who used to come to Makkah through Hajj and Umrah. याद रखिएगा, before even Islam, Quraysh and Arab Rashawar, they used to perform Hajj and Umrah, Hmm. but they were doing this Hajj and Umrah in a wrong way, which was not exactly taught by Ibrahim Ismail Islam, but it was fabricated uh, and you can say tempered by their forefathers, and they're doing something which was totally against Islam. अब इसके क्वेश्चन जो बनाता है एग्जामिनर, वो तो ये द प्लेजेस ऑफ अकबा वर मेड इन द प्रॉफिट्स लास्ट ईयर इन मक्का, outline the reasons for these pledges and write about the details in them. It is also one of the question asked by the examiner. It get 10 marks. I believe you can see the screen. आपकी स्क्रीन में चीज आ रही होगी. सर अभी तो ओल्ड वाली स्क्रीन नजर ही आ रही है, वो जो आपका पार्ट बी वाला था ना. अच्छा, अभी तक वही है. यस. सॉरी. यस सर, अब नजर आ रही है. So this is the longest question made by the examiner relating to this event of pledges of Aqaba. Prophet's attempt to spread Islam outside Makkah was unsuccessful. जैसे आपको मैंने बताया कि when there was no travel protection in Makkah, Abu Lahab taken back that Jiwar. आपकी स्क्रीन आ गई, सेकंड स्क्रीन आ गई है सामने. यस यस सर, आ गई. So he went to Taif, and Taif was also successful, and he was totally in loss. So he started thinking, भाई I have to complete my mission. मुझे तो ये करना था, मुझे पढ़ाना है, मेरा मिशन है ये. So he tried to do preaching to whom? To strangers, यस. those people who used to come to Makkah doing Hajj and Umrah. Why it is not here? As I told you earlier, people they used to come to Makkah different occasions for Umrah, not just in the month of Zilhijjah, because month of Zilhijjah was taught to them by Ibrahim Salam, Ismail Salam कि भाई Zilhijjah के महीने के अंदर ही हज होता है, लेकिन उम्रा तो कभी भी कर सकते हैं. यस. When they used to come to Makkah, particularly at the time of Hajj, because it was a big gathering, Holy Prophet he went to the pilgrims to their camps, and he used to preach Islam. So whenever he went over there, Abu Talib, he used to start calling him with the bad names. He let people know, do not listen him. He's a magician. He's a liar, and he is a poet. So people when they saw कि भाई इसके अपने लोग इसके साथ नहीं दे रहे, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो. बार बार ऐसा होता है ना, जब अपने लोग यस. साथ नहीं दे, लोग कहते हैं तुम्हारे अपने लोग नहीं तुम्हारे साथ रहे, पता तुम कैसे हो, काबिल एतमाद हो कि नहीं हो. In a way, he was keep preaching. He did not stop, and finally, what happened? Soon after the event of Taif, met 6 men in Makkah who had come from Yathrib for the annual pilgrimage. 6 men from Yathrib, and they were the first people who embraced Islam. अब कैसे इस्लाम कबूल किया? Actually, when they met Holy Prophet, and Holy Prophet he taught them about Islam, about his prophethood, they realized that this is the same man who has been
used by the Jewish people to threaten us. अब देखो यसरफ में क्या कंडीशन थी. यसरफ में कंडीशन ये थी कि देवर 3 big Jewish tribes, Banu Kanuka, Banu Nadir, Banu Qurayza. And the Jewish people, since the very beginning, they had some sort of superiority complex. And unfortunately, the Quraysh of Makkah and idol worshippers, they have some inferiority complex. उनके अंदर complex ये था कि भाई Jewish people are better than us. Why? Because Jewish people, they had their book and we had no book. And Jewish people, since the very beginning, they were very rich people. They were having lots of money, influences. वो अपनी कम्युनिटी को बड़ा सपोर्ट करते हैं. जैसे आज भी आप देख रहे हैं इसराइल को पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया के लोग उसको सपोर्ट करते हैं. तो they were in this separate complex and they don't like this idol worship. They believe कि हम बहुत हाई क्लास हम बिलोंग करते हैं. इसके साथ साथ the Jewish people, they used to threaten idol worshippers and Quraysh of Makkah and Yasrib people, and they told them that very soon Mahdi, a Messiah, the last prophet will come, and when he will come to us, we will rule the whole world and he will support us. यानी कि हम तो पहले पढ़ चुके हैं ना कि not just the Christian people but the Jewish people were also waiting for the last coming of Allah, because they knew it was written in their book that the last prophet Ahmad or Muhammad will come before Qiyamah. तो वो इसका इंतजार कर रहे थे, इसको वो डराते भी थे. जैसे sign of Qiyamah होता है ना, हमारे अंदर क़यामत की निशानियां ये होती हैं. तो जब औस और खजरज की जो ट्राइब थे ना, they were rival tribes. They used to fight. They were idol worshippers, लेकिन ये जनाब लड़ते थे आपस में. And the Jewish people, they manipulate their enmity and they try to instigate both of the tribes to fight against each other. And when they started war, they need some finance to buy the weapons, to support the army, and they borrowed money from these tribes on interest basis. यहूदी बहुत शुरू से सूदी कारोबार करते थे और वो जब पैसे देते थे इंटरेस्ट चार्ज करते थे. और औस और खजरज के लोग थे एक ही मतलब मानने वाले. तो when they met Hazrat Muhammad sallam and Prophet he told them about Allah and Prophet, तो they realized कि यार कहीं वही आदमी तो नहीं है जिसका नाम लेके जूश लोग हमको डराता है. तो they decided, कुछ आदमी ने सोचा कि भाई अगर ये वही आदमी लग भी ऐसा रहा है कि वही आदमी सच्चा आदमी, तो they believe कि before that कि Jewish people they do accept him as their messenger, we should accept Islam. We should go further. तो उन्होंने इससे पहले कि यहूदी लोग इस्लाम कबूल करते हैं, खुद इस्लाम कबूल कर लिया. And they accept Islam and they believe in Allah and Prophet. तो Prophet ने कहा कि okay, when you go back to your place, अपने जब शहर में आप जाएंगे, तो you should tell your people about me, about Allah, about Islam, and try to bring more people and try to spread Islam over there. In this way, those 6 people, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है हम, लेकिन ये कोई प्लेज नहीं थी, याद रखिएगा. जो पहले 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, they took this, okay, we will go over there, we will do Islam, we will follow Islam, but it was not an official pledge which we are talking. That's pledge of Aqaba. We pledge of Aqaba दो थी, pledge of Aqaba first and second. Yes. फिर जनाब क्या हुआ? Initially the 6 men said by they would go back to and tell people about the Prophet. उन्होंने ऐसे किया, they came back to him and returned to Makkah. जब next month वो आए तो they came from जो 6 people थे 12 हो गए. The following with more people, 5 old, 7 new, 10 from Khazar and 2 from Aus took an oath at Aqaba in 621, which is known as the first pledge of Aqaba. Aqaba was a remote area. Aqaba was an isolated area outside Makkah. It was surrounded by mountain, a secret place. As I told you earlier, that Makkans, they did not allow pilgrims to meet to the Prophet. Makkans did not allow Muhammad to preach Islam to the pilgrims. And they used to chase him, followed him, and let people know not to listen to him. But Prophet did not stop his preaching. He was going days and nights to let them people about Islam. So he met these people, 12 people in the secret place that is called Aqaba, and he took that order from now onward, you have to believe in Allah, you have to believe in me as Allah's messenger, and you have to respect your women, you do not kill your daughters. So when they took this first pledge, it's called Pledge of Nisa. Yes. Or the first pledge. In this first pledge, they were told not to not to kill people, to believe in Allah, stop idol worshipping, and stop adultery and all of those things which is not desirable at that time. ठीक है, तो ये जो first pledge भी, this was taken by Holy Quran 621 AD, and this all together 12. पहले में 6 थे, that was not pledge. Second में 12 हो गए, that was first pledge of it's called pledge of Nisa, pledge women.
इसकी वजह ये Yes. थी कि ओल्ड अरब टाइम के अंदर whenever, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होता था और मोस्टली Hmm. they made pledges to stop war, to declare war या stop war. So those pledges which has no war mention over there, they call ये तो औरतों वाला pledge है, तो pledge ही नहीं, तो they don't respect this. तो धर्म तो औरतों की इज्जत नहीं करते थे ना, they use the word of औरत, women as the word of disgracing. So it's Yes. also you know praise of Nisa की उदाहरण तो बात ही नहीं. So when they did the first official pledge, their first official pledge की, at that time they requested Ya Rasulullah, send someone from your side from Makkah to our place who can teach us and newly people and other non-Muslims about Islam. Had Hmm. Musab bin Umair was sent as the leader of the two of the companions, Abdul Makhtoum and Musab bin Umair. Musab bin Umair was the leader, and they went along with these 12 people, few years up, to the people of Aus and Khazraj to spread Islam over there. Yes. Had Musab was staying at the house of Asad bin Zurara. He was a very influential person over there. He was one of the leaders. And two important individuals from Yasrab, Saad bin Muaz and Usaid bin Haider was acting with Islam. Saad bin Muaz की importance इसलिए भी है, आपको याद होगा कि बैटल ऑफ खंदक के बाद, after battle of French, Saad bin Muaz was made as a judge between Muslims and the Banu Qurayza tribe. When they said, Yes. we don't want to make a decision made by you, please make Saad bin Muaz as our judge. Whatever he will make decide according to our own book, we accept that. So when Sadas Musab bin Umar, he was keep preaching to the people. So those 12 people, which initially six, now it became either 70 or 75. So the next year, up to 75 people, they came to Makkah during the Hajj time, and Prophet he took them the same place, the same remote area that was Aqaba, and he took another place which was called second place of Aqaba. And this time, when the pledge was taken, they offered Prophet Ya Rasulullah, Makkah is unsafe for you. You are a leader, you are a messenger. We would like to ask you, would like to request you to please come to our city because we need a leader. Makkah Hmm. is not safe. People there are about to kill you. So if you can come to us, we will welcome you and we'll make you our leader. And we can, you can live, we can live over there in peace, and we can follow Islam openly. So when they were Yes. taking this oath, it said as Abbas, one of the Prophet uncle, he was at that time he did not accept Islam. Abbas also Islam कबूल नहीं किया था, Hmm. लेकिन शायद उनके अंकल थे, उनसे मोहब्बत करते थे. He went with the Prophet to people of Yasrab, and when people of Yasrab this taking this oath, इसको कहते हैं pledge of harb, pledge of war भी कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, we will fight for you, we will sacrifice a life for you if you come to our place, and if there will be any danger for your life or if there is anyone enemy attack on you, we will fight for you, we will sacrifice for you. तो उस वक्त हज़रत अब्बास ने कहा कि you know what you are talking, you are giving asylum protection to one who is the enemy of Makkah, so you give the protection, so they might become your enemy, so they will attack Yes. upon you and you will have to protect my nephew. तो उन्होंने कहा don't fear, we have taken our oath. तो इस वजह से इस प्लेज को जब हज़रत अब्बास ने इंसिस्ट भी किया, उन्होंने कहा कि हम दे देंगे. उस वजह से इस प्लेज को कहते हैं प्लेज ऑफ वॉर और प्लेज ऑफ हर्ब. Hmm. तो दो प्लेज हो गई. पहले प्लेज को कहते हैं प्लेज ऑफ निसा, द प्लेज ऑफ वुमेन, एंड सेकंड को कहते हैं प्लेज ऑफ हर्ब और प्लेज ऑफ वॉर. और इसकी वजह बता दी आपको मैंने. इसकी वजह यही थी कि they took an oath कि या रसूलल्लाह, Makkah is totally unsafe for you. We would like to ask you to please come to Medina with your Muslims friends sisters. We will give asylum, we will protection to you. We can make our own state over there, and we can live and we can fight for you. Hmm. That is one of the reason. That was, you can say, one of the cause of Muslim migration from Makkah to Medina. इसके बाद का टॉपिक था ना हमारा माइग्रेशन टू मदीना. अब तो हम नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास से हम 10 के टॉपिक पढ़ेंगे. Hmm. तो ये जो एक क्वेश्चन आता है, माइग्रेशन टू, एक फ्रेज है माइग्रेशन टू मदीना. Yes. ठीक है. अब ये फ्रेज तो एक एग्जामिनर 3 क्वेश्चंस बनाता है. मैं भी बता देता हूँ ताकि तुमको आसानी हो जाए. Hmm. एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि डिस्क्राइब द मेन इवेंट दैट लेड अप टू द प्रॉफिट्स माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना 10 मार्क्स का. ये गलत क्वेश्चन है. इसके अंदर फ्रेज क्या है? माइग्रेशन टू मदीना. दूसरा Yes. क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि डिस्क्राइब द मेन इवेंट प्रॉफिट माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना 10 मार्क्स का. Hmm. तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं.
और इसके तीनों क्वेश्चन दे रहे हैं, एक फ्रेज कॉमन है, दैट इज माइग्रेशन टू मदीना। तो इसका अलग अलग क्वेश्चन होता है। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने बताया कि डिस्क्राइब द मेन इवेंट दैट लेड अप द प्रॉफिट माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, उसमें यस ये सारे कॉजेज आएंगी कि क्या कॉजेज बनी जो प्रॉफिट की माइग्रेशन की वजह बनी। उसमें वन ऑफ द कॉज वाज बैज ऑफ अकबा। सर, ठीक है, परसिक्यूशन भी हो सकती है ना? परसिक्यूशन तो शुरू होगी, लेकिन जो परसिक्यूशन होगी जाहिर होता है विजिट ताइफ होगा ब्रीफली, इसके हम्म। अलावा बॉयकॉट होगा, ब्रीफ होगा, ठीक है, और ये प्लेजर यस। पक्का भी होगा। ये तो उसके हो जाएंगे रीजन वगैरह। लेकिन जो इमीडिएट कॉस्ट बनी ना, वो इमीडिएट कॉस्ट बनी थी मक्कन्स प्लान टू किल होली प्रॉफिट। वो आपको यस। मेंशन करना पड़ेगा, ये वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो दिस इज अबाउट प्लेजर पक्का विच मेड प्रॉफिट। अब जब उस देखिए ना, इसकी एक वजह ये भी बनी कि प्रॉफिट ही थॉट कि भाई द फर्स्ट माइग्रेशन वी मेड फ्रॉम मक्का टू Abyssinia, and we did not know how Negus will react. We had a good faith in him. He's a just king, kind king. He might protect our right, and it's proven true. Now the first pledge, first migration was successful. तो ये तो ज़्यादा सक्सेस इस वजह से हो सकती है कि this time we are migrating to our own people, own Muslim people. So that first migration was also one of the cause which made Muslim to go from Makkah to Medina. यस। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक पार्ट बी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इन योर व्यू व्हाई शुड मुस्लिम प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर सर, आपने अदर। जब से स्लाइड चेंज की है क्या? हाँ कि मैंने की है। स्लाइड अभी मुझे वही वाली शो हो रही है जिसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, द प्लेजर्स ऑफ अकाबा वर मेड इन द प्रॉफिट्स लास्ट ईयर इन मक्का। जो मैंने तो 58। कितने सारे स्लाइड चेंज कर दिया है मैंने। नहीं, मुझे जब से वही शो हो रही है, पता नहीं शायद अपडेट ही नहीं होती, शायद क्या है। अच्छा, तो तुम्हें ये पता ही नहीं चला लो भाई कि मैंने तो बहुत सारी स्लाइड चेंज कर दी। आ रही है, नजर आ रही है अब मैं। यस यस, अब चेंज हुई है। आ रही है ना स्लाइड। अब आ रही है। अच्छा, तुमने सब देखा ही नहीं। यस, पता नहीं वो एक ही स्लाइड के ऊपर स्टक हुआ होता। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ शायद तुम देख रहे हो भारत। अब ये क्वेश्चन है दैट कैरी 4 मार्क्स इन योर ओपिनियन। Why should Muslims provide a safe haven for others? Give reasons for your answer. So we have to keep the migration, not just migration, but the pledges of Aqaba, and we can write the answer why we think that we should give Muslims the safe haven if there is any possibility. अब इसको हमारे डेली लाइफ में अप्लाई करें, एंड यू कैन थिंक, यू कैन इमेजिन कि if there is situation prevail in the world right now that Muslims are in danger, they are being यस। persecuted, tortured, their life and property, their region was not safe, and if they are migrating from a place to another place, so what should be our reaction? तो पहले बताओ, मुझे बताओ कि डू यू थिंक दैट there is a situation prevail nowadays that Muslim they are in danger, their life and region in danger? यस सर, मतलब बिगेस्ट एग्जांपल भी पैलेस्टाइन उसकी है। Very true, exactly. Very true. So whenever we have this type of question, it's usually made by the examiner when the time ये question दोबारा आ सकता है क्योंकि ये कैसा का जो incident is in currently is working, it's going on. Before that, like they should provide a safe haven for people who are fleeing persecution, such as the fleeing the war in Afghanistan, Syria, etc., and their government should provide shelter and basic facilities for them. अब अफगानिस्तान की तो बात पुरानी हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट यस। व्हेन द रशिया इन्वेडेड, सो वी कैन राइट अबाउट द Burmese Muslim from Myanmar who are escaping from Burma to Bangladesh and India and Pakistan, and how these people they were being persecuted, tortured. So whenever they come to us, we should provide them the shelter. ऐसा होना चाहिए जैसे कि people of Yasrab, they provided, they gave shelter and protection to Holy Prophet, not the Holy Prophet, but all the Muhajirin who left यस। their hometown over there. लेकिन ज़ाहिर तभी ऐसा तो होता नहीं है, तो बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। It is from the teaching of Islam. सर, आपकी आवाज। Who migrating. Similarly,
we should try to support our Muslim brother whenever they are in danger. लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, सिर्फ सियासी बातें होती हैं। प्रैक्टिकल बात है, पूरी दुनिया के अंदर कोई इस्लामिक मुल्क तो है नहीं 100 की बात। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 100% इस्लामिक मुल्क कोई भी नहीं है। अगर कुछ कह सकते हैं आप किसी बारे में किसी हवाले से, तो दैट इज अफगानिस्तान, द तालिबान गवर्नमेंट। उस पर भी एतबार है कि वो 100% है कि नहीं। और बाकी ममालिक जो है दे आर बाय नेम मुस्लिम कंट्री लाइक अस, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, इस्लामिक पाकिस्तान 100% हम तो कहीं पर भी नहीं, ना ईरान में ना सऊदी अरब के अंदर है। बट एनीवे, even in these circumstances, agar people of Gaza or like Syria or Jordan, whatsoever, they are in trouble, we should support them in all way possible. ठीक है ना, ईरान के लोग माइग्रेट करके ना रशिया भी जा रहा, आपने देखा होगा। Muslims could also provide a safe haven for those who have lost their families, especially who are now orphaned, whether it be due to war or famine or natural disasters. तो वी शुड ट्राई टू सपोर्ट दोज पीपल। मुझे ये ऑर्फन की बात याद आ गई। मैं अक्सर अपने क्लास में अपने लेक्चर में बताता हूँ कि व्हेन आई ज्वाइन बिगन हाउस ना इन 2008 में, जब मैंने बिगन हाउस ज्वाइन किया था, हम लोग थे ब्लॉक 7 में। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, शायद अब डॉक्टर बन गई होगी, तो अम्मी भी बन गई होगी। तो वो बच्ची जो है ना, बड़ी मतलब बहुत मतलब गोरी सी थी, उसकी आंखें ना भाई इंग्लिश टाइप की बच्ची थी वो। तो बहरहाल बहुत कम गो थी। तो जब पीटीएम हुई ना, तो पीटीएम उनके पेरेंट्स आए पीटीएम में। तो उसमें मुझे पता चला कि जो फादर हैं वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन है कराची यूनिवर्सिटी के, मदर वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोफेसर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। सो फादर मदर दे वर both professors in English department Karachi University, and father was the chairman of the department and mother was the one of the professor, and they were so much having a dark complexion. तो वो कैसे लग ही नहीं रहे थे कि इसकी बच्ची है। वो दोनों अम्मा अब्बा दोनों सामने थे, बच्ची एकदम गोरी अंग्रेज टाइप की। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, समझ में आ रहा तुम्हें? यस। तो बाद में मैंने टीचर से पूछा, मैंने क्या ऐसा कैसा हुआ? तो फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली बोथ ऑफ द प्रोफेसर दे हैड नो चाइल्ड and they adopted this girl and she was from Bosnia. आपको शायद याद ना हो, आपके अम्मा को याद होगा, एक वॉर हुई थी बॉस्निया में, सर्बिया और बॉस्निया के दरमियान। दोनों जब चेकोस्लोवाकिया डिमोलिश हुआ था ना, तो उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स बन गए थे, सर्बिया, बॉस्निया। तो वहां पर में वॉर आपस में छिड़ गई थी। हालांकि एक लैंग्वेज थी, लेकिन क्योंकि मुसलमान थे बॉस्निया के लोग, तो सर्बिया के लोगों ने बहुत ज्यादा किलिंग की वहां पे। they had killed thousands of people, thousands Muslim over there. So when the lots of children they became orphan, so all over the world Muslims state they provided shelter to orphan kids. तो बहुत सारे बच्चे कुछ पाकिस्तानी लोगों ने भी अडॉप्ट किए। तो उस एडॉप्शन के अंदर ना उनके प्रोफेसर के बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बॉस्नियन बच्ची को अडॉप्ट किया था। मैंने कहा अच्छा यार ये वजह है कि बच्ची तो एकदम अंग्रेज की तरह गोरी और उनके अम्मा पर तो सावलेंस है। एनीवे द पॉइंट इज दिस कि बेटा अल्लाह ना करे जब ऐसे हालात हो ना, तो बीइंग अ ट्रू मुस्लिम वी शुड बी रेडी टू प्रोवाइड शेल्टर। अब ज़्यादातर हम पूरा नहीं भी कर सकते, तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू सपोर्ट दोज ऑर्गेनाइजेशंस who are trying their best to provide shelter to those people who are in need. Providing homes and shelter for them would allow them to start new life, much like Muslims of Makkah started a new life into the Hijrat of Medina. How the people of Medina, Ansar, they supported them fully. Even they divided their property into half, and they provide one half to their Muhajir brother, and they share their all houses and property with them. Also, the Prophet said that person who look after an orphan will be with him. ये आपको तो आप हदीस भी आपने पढ़ा होगा, आपके sort of हदीस भी है। Ana wa kafil al-yatim, me and the person who look after the affairs of orphan, he will be with me in heaven like this, and he showed his two fingers side by side. So in this way, how Muslims are supposed to support people of that time or today's time if that condition comes to you? In your opinion, why should Muslim provide a safe haven for others? Given for your answer. जब इस तरह क्वेश्चन आता है, यू कैन इजीली थिंक, यू कैन डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड यू कैन राइट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके सर। तो अब हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ग्रेड 10, और फिर इसको हम देखते हैं इसको क्या समझ किया जा सकता है। जस्ट वेट ओवर हियर।